हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके HPSSC के पोस्ट कोड 839 का जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे उसके आगे वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने हिमाचल जी के और साइंस के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से जो है आपका करंट अफेयर्स को। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी अभी तक स्टार्टिंग वाली तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। सो the first question is, introducing a man, a woman says his wife is the only daughter of my father. So the correct answer, how is man related to the woman? So that is D, husband. Next is, India recently signed an agreement with which country for submarine rescue support and cooperation between the navies? So the correct answer over here is Singapore. Next है आपका Desert Night 21, which was in news recently, is the military exercise between India and which country? So the correct answer over here is इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी is the correct answer. Next is, which institution recently released the India Innovation Index? So the correct answer is institution पूछा गया है तो आपके नीति आयोग. Next is, which state has recently raised the number of working days under Manrega from 100 to 150 days? So the correct answer is Uttarakhand. Next is, which country chaired the recent session of executive board of WHO held in January 2021? So the correct answer over here is India. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Which Indian Union Minister was recently conferred with the Sahitya Gaurav Samman awarded by Hindi Writers Guild Canada? So the correct answer is D. Next is, which country's Mars digger probe named the Mole was declared dead recently? So the correct answer is USA. Next is, iStupa, Swasthya Portal and Prayas Dashboard, which were in news recently, are the initiatives of which union ministry? तो किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है, इज द करेक्ट आंसर. बात करते हैं नेक्स्ट. कॉस्कोस द स्टेपल food of which region has been recently included in the UNESCO Cultural Heritage List? So the correct answer is North Africa. Next is, Eswatini, which was in news recently for the demise of its prime minister, is located in which continent? कौन से continent में? आपके अफ्रीका में है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो इसमें से आपके डिटर्मिनेशन का ये होगा सी, फिर इसका आपका जो रहेगा वो है आपका बी, देन थर्ड कॉन्ट्रोडिक्शन का आपका ए रहेगा, एंड इसका आपका कॉशियस का आपका डी रहेगा, एंड रिस्ट्रेन का आपका ए रहेगा. Next is, choose the most appropriate option out of the four alternatives. So infatuation dash wealth ruins a person. For is the correct answer. I lived in Delhi for 5 years. Next is, he did not go dash the whole book before giving his opinion about it. Through the whole book before giving the opinion about it. Next is, if he had worked hard. ठीक है, C is the correct answer. He would have passed the examination. Next is, hardly had he arrived when it start raining. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आपको ऑपोजिट देना है, सॉरी नेक्स्ट में आपको बेस्ट जो मीनिंग कन्वे करते हैं एक्सप्रेशंस के तो वो देने हैं. अ पर्सन हु लिव्स अलोन विद एंड अवॉइड्स अदर पीपल. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, अ पर्सन हु does not know how to save money. D is the correct answer. Next is, something which is not through or profound, that is superficial. A is the correct answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A person who maliciously destroy by fire. The correct answer is D. Next is, a person who use fear as a weapon of power is terrorist. Next is, opposite meaning बताना है. Tragedy का is comedy. Then blatant is quiet. Then next one is your genuine.
Then the impound, the correct answer is your release. Then for 77th the correct answer is A. नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला हिंदी पोर्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट, द इंदस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद, सो डी इज द करेक्ट आंसर. Next is Brahmanas are the books that deals with your, B is the correct answer. Next is Lord Buddha was born in, तो कहाँ हुए थे? The correct answer is D. Next is the first council of Jainism was held at, C is the correct answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Sakas were finally overthrown by, so the correct answer is C. Next is Kharvela ruled over, so the correct answer is A. Next is Vatapi was the capital of the, so the correct answer is D. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्केट कंट्रोल वॉज इंट्रोड्यूस इन द medieval India by, so the correct answer is A. Next is Kabir was the disciple of, so Ramananda, C is the correct answer. Next is the Bahmani kingdom was founded by, I'm not sure about this answer. Next is the birthplace of Guru Gobind Singh is, so the correct answer is D, Patna. Next is who installed the chain of justice, तो किसने इंस्टॉल की थी आपकी चेन ऑफ जस्टिस? इसका जो आपका करेक्ट आंसर है जहांगीर है. नेक्स्ट इज द सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन 1498 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द रेड, किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ. नेक्स्ट इज रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, तो किसने बिल्ड किया था? आपका शाहजहां ने बिल्ड किया था. डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज तुलसीदास वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर, D, Akbar is the correct answer. Okay, next. Akbar. Next question is, Gandhiji's first fast in India was in connection with, so the correct answer for this is your Champaran Satyagraha, A. Okay, next is Muslim League first demanded partition of India in which year? तो कौन सी ईयर में उन्होंने 1940 में फर्स्ट डिमांड किया था. नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसने किया था? आपके लॉर्ड डलहौजी ने किया था. नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज वाज, तो कौन थे? वो आपके गांधी जी थे. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज आपका द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द regime ऑफ, so the correct is A is the correct answer. Next is the first woman film star nominated elected to the Rajya Sabha was, आपकी A is the correct answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Which state has the largest representation to the Lok Sabha? So the correct answer is UP. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Parliament of India is composed of your Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Next is the President of India can be removed from his office by the, तो कौन remove कर सकता है? Parliament by the process called impeachment. Okay. Next is your which High Court has jurisdiction over the state of अरुणाचल प्रदेश, मतलब किस हाई कोर्ट की अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है? सो द करेक्ट आंसर इज गुवाहाटी. नेक्स्ट इज द 9th schedule of Indian Constitution of India was added by which amendment? तो कौन सी amendment? आपकी फर्स्ट amendment is the correct answer. ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज. C is the correct answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Which became the 25th state of Indian Union? So Goa is the correct answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. The National Integration Council is chaired by, तो कौन करता है इसको चेयर? आपका प्राइम मिनिस्टर करते हैं इसको चेयर. ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Which is not an element of state, so nationalism is the correct answer. Next is which part of the Indian Constitution declares the ideal of welfare state? So आपके directive principles of state policy is the correct answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, तो कितनी होती है? 250 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आपको पता है आपको विच रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रोहिबिशन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. Next is the which is the smallest planet?
Mercury is the correct answer. Next is Uninox falls on. Vernal Uninox falls on 21st March. Okay. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन दी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है. ट्रोपोस्फेयर से 5 to 6 किलोमीटर ऊपर होता है, बट स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे होता है. ओके. विच इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव. इनमें से आपका साइक्लोन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है. नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक. बहुत बहुत पूछा गया है आपसे क्वेश्चन. बसाल्ट इज. बाकी ये सारी सेडिमेंट्री रॉक्स है. बसाल्ट क्या है आपका? इग्नियस रॉक है. नेक्स्ट इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका नोन एज सनवानास. नेक्स्ट इज एलिफेंट पास इज लोकेटेड इन श्रीलंका. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ बोलिविया इज. तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी है, लालपाज. ओके. नेक्स्ट इज निपन इज द न्यू नेम ऑफ जापान. नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन is the correct answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. which is not a cash crop. so C is the correct answer. next is the chief industrial city of Italy is. so Milan is the correct answer. next is the Mauritius is the inhabitant of. so the correct answer is New Zealand. next question is which is known as the forbidden city. so I'm not sure about this answer. next is the first satellite was launched by. तो किसने लॉन्च की थी? USSR ने. next is which river flows through a rift valley. Narmada is the correct answer. next is the highest rainfall in India is. your jog is the correct answer. next is the which of Indian most of India's rainfall is. most of India's rainfall is. वो कौन सी है? convectional है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. which state is in the easternmost part of India. so the correct answer is your अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. सो कहाँ है वो? असम में है. सो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज रिलेटेड टू योर पॉलिटिकल रेन. नेक्स्ट इज stagflation refers to a situation which is characterized by inflation and rising employment. नाबार्ड इज रिलेटेड टू विच डेवलपमेंट. तो किस चीज़, कौन सी डेवलपमेंट से हैं वो? एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज की डेवलपमेंट से हैं. नेक्स्ट इज इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीजेज द क्रेडिट क्रिएशन विल increase. okay, next question. taxation is a tool of. बहुत बार डिस्कस किया है. fiscal policy. balance of trade is the difference between countries export and import. ठीक है. next question is your in which year new economic policy was announced in India. so the correct answer is 1991. next is banking comes under which of the following sectors. so आपकी tertiary sector के अंदर आता है. next is barter system means किसी भी चीज़ का exchange करना है आपको but without money. okay, so that is your exchange of goods with goods. और तो कोई नहीं है, money हर जगह है. ठीक है. next is what does IMF stands for. so international monetary fund. monetary fund is the correct answer. बात करते हैं next question. interferons are synthesized by in response to viruses. next is what is MS Word. so ये क्या है? word processing सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट इज इन MS Word कॉपी कमांड इज डन बाय Ctrl+C. नेक्स्ट है इन MS Word द कंटेंट्स ऑफ अ क्लिपबोर्ड रिमेन्स द सेम अंटिल यू शट डाउन द कंप्यूटर. नेक्स्ट इज इन MS Word श्रिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्रिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा आर नोन एज योर टेक्स्ट इफेक्ट. नेक्स्ट इज MS Word इफ यू नीड टू चेंज द typeface of a document which menu will you choose. so format menu. Next is what do you do when you make the changes to a document in MS Word. you click on edit. okay, next is how many types of positions can you set for the drop cap in MS Word. so जो इसका correct answer होगा वो 2 होगा according to my knowledge. 2 हम कर सकते हैं. so ऑप्शन में नहीं है. so आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।